So in this video we are going to solve a practical problem, or you can say numerical, related to the topic of fluming of channel sections. Okay, so here uniform flow is occurring at a depth of 1.5 meter in a long rectangular channel which is 3 meter wide, and it is laid to a slope of 0.0009. If Manning's constant n is 0.015, we need to calculate the width of the contracted section which will produce critical depth विदाउट इंक्रीजिंग द अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो. ओके, सो यहाँ पे एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर चैनल दिखाई गई है. So this is the long rectangular channel, this is the top view of the channel. Okay, and if I can draw, then this is the 3D view of your rectangular channel section. Okay, so the water is flowing into this channel section with a depth of flow 1.5 meter and which is 3 meter wide. Okay, now and it is laid to a slope of, okay, the slope is 0.0009. Okay, Manning's constant n is given, so we need to calculate the width of the contracted section which will produce critical depth without increasing the upstream depth of flow. Okay, so the width of the contracted section means that due to some natural reason, okay, when you are working in field, because of one or the other reason, sometimes it may happen that you need to flume the canal, or it means you need to reduce the width of your channel section. Okay, so in that case this is known as the fluming of channel section. So what they are trying to say that what will be the width of the channel section. ये हमारी width अभी कितनी है, this is top view, so this is 3 meter. Now due to any reason when we are fluming this channel, तो उसकी width कम हो जाएगी. तो ये width हमें कितनी provide करनी है जिससे यहाँ पे critical depth maintain हो. Okay, which will produce critical depth, because we know that at critical depth yc the specific energy will be minimum and the discharge will be maximum. This relation we know. Okay, so अगर हम critical depth maintain करेंगे तो हमारी specific energy minimum होगी, and as a result of which the energy loss will be लेस. ओके, जो एनर्जी का लॉस होगा वो कम होगा और हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा. सो वी नीड टू मेंटेन दिस कंडीशन. Okay, we need to maintain this condition, and for this condition what could be the contraction in the width which we can provide, so that यहाँ पे critical depth yc maintain हो सके, ताकि जो contraction हो रहा है उसकी वजह से जो head loss हो वो कम हो और हमारी specific energy minimum हो और हमारा discharge maximum हो. ठीक है, so fluming of channel section, applying the condition of E1 is equals to E2, because energy, specific energy will not change at any section. और वो क्यों चेंज नहीं होगी, बिकॉज बेड स्लोप इज नॉट changing. ठीक है, I can help to recall you that the total energy of a flowing fluid in open channel is given as Z plus Y plus V square by 2G. Okay, but in case of specific energy we are considering Z as a datum, we are considering the bed slope of channel as datum. So suppose this is the datum, this is the bed slope of channel, bed slope, this is datum. Okay, this is distance Z, this is Y, and this is V square by 2G. So this is the total energy of a flowing fluid. But here हमने specific energy में क्या किया, ये जो हमारा bed slope है उसको हमने क्या consider कर लिया, datum. उसकी वजह से Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. सो स्पेसिफिक एनर्जी हमारी हो गई y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g. सो स्पेसिफिक एनर्जी में चेंज आएगा, कब चेंज आएगा, जब हमारा बेड स्लोप चेंज होगा. सो इफ यू कैन सी देयर इज नो चेंज इन द बेड स्लोप. एक बेड स्लोप कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 0.0009. ओके, सो वो केस में हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे विच इज़ E1 इक्वल्स टू E2, बिकॉज स्पेसिफिक एनर्जी विल नॉट चेंज एट एनी सेक्शन, एंड देयरफॉर why, because bed slope is not changing. Okay, clear हो गया. So now in case of E2 I can write E1 is equals to E minimum.
ओके, वाई आई कैन राइट ई मिनिमम, बिकॉज हमें डेप्थ कैसी, जो सेक्शन 2 है हमारा, सपोज दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2 सो हमारा जो सेक्शन 2 है वहाँ पे हमें कैसी डेप्थ मेंटेन करनी है, which will produce critical depth. Calculate the width of the contracted section which will produce critical depth. ओके, सो हमें यहाँ पे डेप्थ कैसी मिलनी चाहिए, क्रिटिकल डेप्थ, एंड वी नो दैट एट क्रिटिकल डेप्थ द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम. सो E2 की जगह पे आई कैन राइट E मिनिमम. ठीक है, ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E1 विच इज y1 प्लस v1 1 स्क्वायर by 2g is equals to yc plus vc square by 2g, or we have one more relation between E minimum and yc, that is 3 by 2 of yc. Okay, so here we are getting equation y1 plus v1 square by 2g is equals to 3 by 2 of yc. Now instead of yc, okay, so y1 plus v1 square by 2g is equals to 3 by 2 of q square by g whole raised to 1/3. Okay, because we know that yc is equals to q square by g whole raised to 1/3, and again in place of this q square I can write capital Q square upon small b square, which is discharge per unit width of channel. Okay, so y1 plus v1 square by 2g is equals to 3 by 2 of q square upon b square into g whole raised to 1/3. ओके, ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो आपका 3 by 2 ऑफ yc है तो yc के जगह पे तो पहले फॉर्मूला रख दी q square by g whole raised to 1/3. अगेन इन प्लेस ऑफ q square I wrote q square upon b square. So q square upon b square into g whole raised to 1/3. Okay, now we need to find this width of the channel at section 2. Okay, so I can write b2 square. Okay, here I can write b2 square because हमें कौन से सेक्शन पे हम ये जो इक्वेशन है वो कौन से सेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, सेक्शन 2 पे. ओके, सो हियर आई कैन राइट b2 स्क्वायर. ओके, नाव इसमें से अननोन कौन से है, वी हैव y1 बट वी डोंट हैव v1. सॉरी, यस, वी ऑल्सो डोंट हैव v1, हमारे पास y1 भी नहीं है. ठीक है, सो बट हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू दे रखी है. सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v बाय द इक्वेशन 1/n r रेज टू 2/3 s रेज टू हाफ. ओके, सो हमें v1 मिल जाएगा, n की वैल्यू है, r विल बी एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, b इंटू डी अपॉन b प्लस 2d होल रेज टू 2/3. दिस इज 1. ओके, एट सेक्शन 1 इंटू स्लोप की वैल्यू दे रखी है हाफ. सो हियर फ्रॉम हियर v1 you will get the value of velocity in meter per second. Substitute that value of velocity over here, so you will get the value of E1. ओके, नाव इसमें से हमें सब्जेक्ट क्या बनाना है, b2, बिकॉज हमें कॉन्ट्रैक्टेड विथ कितनी रखनी है वो चाहिए. सो उसके लिए हमें कैपिटल Q चाहिए विच इज़ डिस्चार्ज. सो अगेन वी कैन यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2. ओके, सो हमारे पास डिस्चार्ज हमें कहाँ से मिलेगा, A इंटू A1 इंटू V1, बिकॉज सी Q इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, आप कोई भी सेक्शन ले लो तो Q1 Q2 नहीं रहेगा, Q will be constant. So Q is equals to A1 V1, therefore making okay, so A1 we have y1 इंटू b1 इंटू v1. v1 जो हमें यहाँ से मिला वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी. सो दैट वैल्यू ऑफ q वी कैन सब्सटीट्यूट ओवर हियर. सारी वैल्यू मिल गई, 3/2 q की वैल्यू मिल गई, वी नो g विच इज़ 9.81. सो मेकिंग दिस b स्क्वायर एज अ सब्जेक्ट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b विच इज़ द विड्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन. ओके, और हमें ये b की वैल्यू किस प्रकार से मिलेगी, जिससे हमारी डेप्थ सेक्शन 2 पे क्रिटिकल होगी. सो उससे क्या रहेगा, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम रहेगी और हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम रहेगा. ओके, सो दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड बाय कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b. इट मीन्स दैट
इट मीन्स दैट सेकेंड सेक्शन पे हमें विथ यहाँ पे 3 मीटर है, तो यहाँ पे हमें विथ कितनी रखनी है, दैट वी कैन नो from this value, and that value has been obtained using the concept of specific energy. Okay, and that is for fluming of channel section. ओके सो जब कभी भी फ्ल्यूमिंग ऑफ चैनल सेक्शन की बात आए और आपकी विथ को रिड्यूस करने की बात आए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट उसका जो बेड स्लोप है वो चेंज नहीं होगा, उसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, एंड यू नीड टू यूज़ दिस कंडीशन. अगर आपने ये एक कंडीशन रिमेंबर कर ली तो उस पर से आप कोई भी अननोन यू कैन कैलकुलेट इजिली. ओके, थैंक यू.